Hello and welcome students, myself Kumar Saurabh. Today I am present in front of you with yet another daily practice sheet. What we are going to do today is we are going to look into the passage first of all in brief. We are going to discuss that first, and then based on that we are going to solve the set of questions which are there. So without wasting any more time, let's start with today's discussion. Okay, so here's the passage. Let's see what this passage is all about. Given that our prisons are full to bursting, as the number of people in them has risen by over 50% in the last 5 years, and the number of people reoffending shows no signs of dropping, can anyone tell me why bother to imprison women? अच्छा, तो ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उससे ये बताया गया कि एज फार एज द prisons that we have in place are concerned, तो वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं एंड पीपल जो रीऑफेंड कर रहे हैं, जो बार बार ऑफेंस कर रहे हैं, उनके नंबर में कोई चेंज आ नहीं रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा, वो डिक्रीज नहीं हो रहा. तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि विमेन को इम्प्रिजन किया ही क्यों जाए, जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो उन्हें जेल में क्यों डाला जाए. अच्छा, I can't see why a socially aware government cannot treat most female offenders differently. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है इस पार्ट ऑफ द पैराग्राफ में. ऑथर का ये कहना है कि he is not able to see the reason as to why an aware government cannot treat most female offenders differently. ये समझ नहीं आ रहा है ऑथर को. तो बेसिकली इससे ये कहना चाह रहा है, ये आपको फिर डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं थोड़े, कि ज़्यादातर केसेस में जो विमेन है वो कोई ग्रेव ऑफेंस करती नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम चलाने का काम विमेन नहीं करती ज़्यादातर केसेस में, और जो वायलेंट क्राइम्स हैं उनमें भी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है विमेन का. तो क्यों नहीं एक अवेयर गवर्नमेंट विमेन ऑफेंडर्स को डिफरेंटली क्यों नहीं ट्रीट कर सकती है. सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच द ऑथर इज आस्किंग अस थ्रू दिस पैराग्राफ. देन द ऑथर इज सेइंग women are not generally running major crime syndicates, drug factories or huge financial frauds. Women are not generally burglars or robbers using guns. Almost 40% of women in prison are there for drug offenses, often carrying drugs or selling drugs for other people. A large number are users who committed crimes to fund their habit, in which case they need treatment which could be provided in a secure accommodation. तो इस पार्ट ऑफ द पैराग्राफ से आपको ये पता चला कि जो बड़े क्राइम्स हैं, जो ग्रेव ऑफेंसेस हैं, उसमें पहली बात विमेन है नहीं, और अगर हैं भी तो बहुत ज़्यादा नहीं है. ज़्यादातर केसेस में अगर ऑफेंस की भी बात है तो उन केसेस में भी विमेन आर विक्टिम, और उनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल इन केसेस ऑफ ड्रग अब्यूज़, तो वहाँ पे उनको हेल्प और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. ये ज़रूरत नहीं है कि उन्हें आप जेल में डाल दो तो उससे कोई एंड मीट नहीं होने वाला है. ये कहना है ऑथर का. द नेक्स्ट लार्जेस्ट कैटेगरी इज फॉर वायलेंस अगेंस्ट अनदर पीपल, बट विमेन आर नॉट इनहेरेंटली वायलेंट. अगेन आपको सुनने में अटपटा जरूर लग सकता है, बिकॉज यू माइट नो women who are inherently violent, but here the author is saying that women are not inherently violent. They might be thoughtless, uneducated and selfish. They might be driven by passion and feelings of rejection, but few women kill or harm because it gives them a thrill. Self-explanatory in nature. I don't think I need to explain all of these things separately. Then, new figures reveal that incidence of self-harm among prisoners has increased 5-fold since 1998, and that the number of women harming themselves in prison has soared. तो ये बात बता के भी, by telling this that the number of women who are harming themselves in prisons has increased many folds, basically the author is again trying to depict them in a victim's light. उन्हें victim बता रहे हैं और ये बताने की कोशिश है कि उनको ट्रीटमेंट चाहिए, उनको हेल्प चाहिए, उन्हें सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मदद देने की ज़रूरत है.
चलो बढ़िया है. Now based on that, the first question is answer to which one of the following questions would be most important to an evaluation of author's position. Okay, 4 options are there. Here the right answer is going to be C. Would treating female offenders differently violate any law of the land? बेसिकली इस चीज का इवैल्यूएशन करने का कोशिश है और इसी क्वेश्चन के फर्दरेंस में आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है ऑथर अपने इस पैसेज में. नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज? मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज बेसिकली द प्राइमरी कंक्लूजन ऑफ द पैसेज. हियर the right answer is going to be D, which says most female offenders should not be imprisoned. Then very easy question. Third question, which one of the following principles most helps to justify the author's reasoning? Okay, here the right answer is going to be option B, which says imprisonment is ineffective in preventing reoffending and in rehabilitating female criminals. Imprisonment जो है वो इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है रीऑफेंडिंग फीमेल्स को रोकने में, और साथ ही साथ उनका रिहैबिलिटेशन करने के लिए भी ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है इम्प्रिजन करना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following, if true, most allays the author's concern regarding greater percentage increase in female prisoners as compared with male prisoners between 2001 and 2002? Here the right answer is going to be A, which says the proportion of women committing crimes to women going to prison was more between 2001 and 2002 than before 2000. Very easy. Now similarly, last question, which of the following, if true, most weakens the issue of overcrowding in prisons in the region that the author is referring to? Here most weakens the issue of overcrowding. The right answer here is going to be C, which says the work of new penitentiaries in the region, which started 5 years back, has come to completion. तो ये जो इशू रेज करने की कोशिश कर रहा है ऑथर पैसेज में कि यार ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है प्रिजन्स में, तो अगर आप ऑप्शन सी देखो जो कि कहता है कि जो नए पेनिटेंशरीज बन रहे थे, नए जेल जो बन रहे थे और उनका काम 5 साल पहले शुरू हो गया था, वो बन के अब तैयार है, तो वो जो ओवर क्राउडिंग की इशू थी वो तो इससे ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएगा, तो ये वीक कर देगा उस इशू को. सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. So students, this marks the end of this daily practice sheet and of course all the questions which are related to it. I hope you guys understood everything which I tried to discuss, and I hope that you are going to do all the necessary things in order to understand these and in order to do well in your examination. So thank you so much for joining in. I will meet you next time. Till then, take very good care of yourself.